Crack UPSC CSE with India's largest learning platform. Get Plus subscription and access unlimited live and recorded classes. Find over here. Recorded classes. What you will get: daily live classes. You will get live test and quizzes. You will get structured courses. You can find over here. Structured courses you can find over here. And unlimited access is also available with you. You can enjoy the benefit of that. You can have the benefit of that and avail this facility. Those structured courses you will find all these things, all the four pillar of success you will find over here. You will find over here. This all the four pillar of what in this structured course program over here. So this is available exclusive to this Unacademy. Download Unacademy learning app. What you will get: daily live classes, structured and download Unacademy learning app. Download Unacademy learning app. And about me, this is Dr. SM Azad. Did my MA MPhil research work from UGNU Delhi, educating, mentoring civil services aspirants. You can say over 10 years, and authored books in history, political science, polity, social issues, and I teach UPSC, CSE, UGC, NET. All these things are available over here, and my Telegram channel is also reflected before you. It is it is reflected before you, and prepare with top India's educators. Sorry for interruption. There is certain glitch over there. Just a minute. Just a minute. Just a minute, please. Just a minute.
So hello friends, am I audible? It was certain technical glitch due to interruption occurred over here. So now it is okay, and I think you must be available over here. Okay, fine. So the topic which I am going to discuss to you, it is what Indus Valley Civilization. Very significant thing. It is what अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक है ये सिंधु घाटी के सभ्यता के विषय में मैं बात करूंगा. And Indus Valley civilization is not at all, you can say, a very simple part of that. You should have to go in a different dynamic over there. And this topic is basically, it is known as what we can say it is the proto-historic. It is what Indus Valley civilization is known by so many names. सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की आप बात करते हैं, दिस सिविलाइजेशन इज नोन बाय सो मेनी नेम्स. ये सभ्यता कई नाम से जानी जाती है. जो फर्स्ट वन चीज है, इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? इन अनदर नेम ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज हड़प्पा. It is what? It is Harappa. The first thing is that Harappa, then Indus civilization. The second name of this civilization is what? It is also called Bronze civilization. It is what? It is also known as Bronze civilization. The third name of this civilization is what we can say that it is also called, ये जाना जाता है, it is known by the first. It is what? It is known by the first urbanization. Is known by the first urbanization. Okay. So this civilization is known by three names. What significant thing you should have to remember over here? कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रोंज सिविलाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. एंड दिस डायनामिक्स यू शुड हैव टू रिटेन इन योर माइंड. ये डायनामिक आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता कोई एक नाम से नहीं, कई नाम से जाना जाता है. You should have to be alert regarding this. Another important thing regarding this one, Indus Valley civilization. This civilization comes under what? It comes under proto-historic. It comes under proto-historic. युग को क्या कहते हैं? Proto-historic. It is what? Proto-historic. और you can say proto-history भी कहा जाता है. And why it is called proto-history, you should have to keep in your mind. आपको ये जानना होगा, समझना होगा कि इसे प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहा जाता है. दैट इज सिग्निफिकेंट थिंग यू शुड हैव टू कीप इट. अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहा जाएगा या क्यों कहा जाता है, व्हाट वुड बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? क्यों इसे कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड? व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड? तो यू शुड हैव टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ओवर देयर. तब मैं फिर आगे की बात आपसे करूंगा. इट कम्स अंडर द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड. और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसलिए इसे कहते हैं every material were available at that time. It was a complete system. System का मतलब क्या होता है? Civilization. Here we find a complete system over there. A complete system we find over there. And complete system is what we can say, it is called civilization. Complete system का मतलब क्या होगा? वहां पे political system होगा, वहां पे क्या होगा? Social system होगा, वहां पे क्या होगी स्थिति? Economic system होगा, वहां पे क्या होगा? वहां पे culture भी होगा. All the thing will you can say prevail over here. ये सारी चीजें यहाँ पे prevail करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में. या जहां भी टर्म इस्तेमाल करते हैं हम किस चीज का? civilization. If we are going to use the term civilization where the system prevail, where the things are what? System. The political system is there, social system is there, economic system is there, and cultural system is also there. तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या नजर आता है? What is significant part you can find over here? You find that everything is available in a system or civilization. But what is significant thing you should have to keep in your mind? There is also a script. We also find there a script. A script भी मिलता है हम. We also find a script. But what we didn't call over here, the script is still, you can say, yet to decipher. लेकिन स्क्रिप्ट की अब तक जो है कि नहीं खोज नहीं हो सकी है कि भाषा बोली क्या जाती थी, लिखी क्या जाती थी. रिसेंट अफगानिस्तान का एविडेंस है कि वहां पता चलता है कि ब्रहवी भाषा बोली जाती थी. ब्रहवी, BRAHI. दिस वाज इंपॉर्टेंट थिंग वी फाइंड ओवर हियर. ये एक इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल आता है, ब्रहवी भाषा है. लेकिन शोध अभी भी जारी है. एंड द डे स्क्रिप्ट इज डिसाइफर्ड, लैंग्वेज इज डिसाइफर्ड, द हिस्ट्री वुड बी रीरिटन. इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग.
So, so to begin with that, John Marshall was the first scholar who used the term Indus Valley Civilization. सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने लिया, सबसे पहली बार सामने आता है। सिंधु घाटी सभ्यता कही किसने, तो ये टर्म किसके साथ जुड़ा हुआ है, जॉन मार्शल के साथ ये टर्म जुड़ा। तो John Marshall came to prominence with the idea of this. The Indus civilization belongs to proto-historic period, और proto-historic period अभी मैंने आपको बताया, क्या देखते हैं, चैल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज एज उसी का ही हिस्सा है, उसी का ही पार्ट है। According to radiocarbon dating C14, it has spread over to 2500 to 1700 what we can say BC, यानी 2500, कहीं कहीं आप you can find over there it is also find in the condition of 3000 BC, but the 3000 is also the part of that, so it is 2500 to 17,000 BC, 1750 BC, and this 17 BC is what it is called the mature stage of Harappa. Mature, इसे क्या कहते हैं, mature, it is called mature stage of Harappa, stage of you can say Harappan civilization, इसको Harappan civilization के mature stage के नाम से भी। Another significant thing you should have to remember in this connection is what in 1922 archaeologists found out this ancient city of Harappa in the Sindh, means an buried city. The term is what mounds of dead भी कहा जाता है इसे, and it is called buried city. The earliest excavation in this civilization were done at Harappa, and presently it is what in Punjab, and Mohenjo-daro it is in the Sindh region too. Both places are now in Pakistan, Mohenjo-daro, and Sindh means mount of, you can Sindhi means mount of dead. It is what mount of dead. So these are the major places we find over here. The finding in these two cities brought to light a civilization. It was first called the Indus Valley Civilization. पहले इसे क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं. But this civilization was later named Indus Civilization due to the discovery of more sites and even the river valley also find over there. इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं. This is quite significant and you have to retain it for MCQ examination point. Due to discovery of more and more sites, it was called Harappan after the name of first discovered site. So this is why it was called Harappa. Another important thing, nomenclature of Indus civilization. Nomenclature का मतलब क्या है कि किस प्रकार से उसके स्ट्रक्चर को, किस प्रकार से उसके नामकरण की व्याख्या की जाएगी. That is what it is, what nomenclature of Indus Valley civilization. So Harappan civilization named by John Marshall after first discovered site at Harappa, and it was Saraswati Sindhu civilization as most sites have been found in the Harka or you can say Gagga river, and right now what is the situation over here, it is the dry bed. अभी क्या देखते हैं, ये चीजें क्या नजर आ गई है, dry bed नजर आती है. That is why it is what we can say that it is the region, it is located region in the region of Punjab, हरका रिवर के नाम से भी जाना जाता है. और जो इसको जानने की दशा होगी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के लिए, दैट शुड बी नोन बाय द इंपॉर्टेंट साइट्स. अगर एक खास बात देखते हैं, हड़प्पा का डेवलपमेंट की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पा एंड व्हाट वी कैन से एक्सपेंशन साइट ऑफ दिस हड़प्पा, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज नजर आती है हड़प्पा की, तो चीज जाननी है हम लोगों को और नोमेनक्लेचर के आधार पर. पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज दैट the Harappa, if you talk about the map and site of the Harappa, you will find that these sites, locations and these sites का जो geographical मापदंड है या conditions नजर आता है उसके conditions में, that point you should have to remember and it is quite significant from your examination point of view. This is quite significant because if you talk about Harappa sites की बात अगर करते हैं तो it has been expanded in a triangular form. इसका जो sites का जो expansion है, the expansion of the sites is almost in a what we can say in a site of triangular form. ये जो इसका expansion है इसका triangular form में है, and this expansion has very significant part over there. What is that? In the eastern side is there, then the western side is there, then the northern side is also there, then the southern side is also there. So while studying about this topic, Harappan civilization, while understanding about the topic, you should have to keep in your mind that
This civilization has been expanded to the east to the west, west to the south, south to the north part. And the most extended site, if you talk about the east, it is located near Alamgirpur in Delhi. और इस प्रकार से जानेंगे, याद करने का तरीका भी आप रखें. तो इंपॉर्टेंट साइट्स की जब बात करते हैं, क्योंकि all the history, all the development of these sites is based on completely what we can say that archaeological remains और archaeological evidence के ऊपर में आधारित है. Among the many other sites excavated in the most important Koddenji in the Sindh. तो कोटडेंजी साइट कहाँ है? ये सिंध में. कालीबंगन, it is a very important site in Rajasthan. Ropar is in Punjab and it is Banwali, and Haryana, that is important part is that. Then Lothal is also Surkotada and Dholavira. These are also important site over here. और जो सबसे important चीज देखते हैं, sites की बात करते हैं, कि when we talk about the eastern sites, it is located near Meerut, Alamgir. It is located near it is Alamgir. ये आलमगीरपुर में. जब नॉर्दर्न साइड की बात करते हैं, it is located at, what is that? That it is located at Manda. The place is what? The place is Manda. It is the most northern side. और जब साउदर्न साइड की बात करते हैं, it is what? It is the site known as Bhagatrao. This is important. The region of Maharashtra is there. So this site you should have to keep in your mind. Suppose Surkotada and Dholavira. These are the two very significant sites. If you talk about Surkotada, we find the evidence of a skeleton of what we can say horse. So this is important site over there. And if you talk about Dholavira, this sites has, you can say, located in India. And the significant feature of this site is that this site is divided into three major parts over there. And the first example we can find over here is that water management. And another important thing regarding this site we also find over here is that it is in India, and first time we find in the complete Harappan sites, we find over here stone, use of a stone were also find over there. क्या देखते हैं? स्टोन का भी प्रयोग हरप्पा में इस कंडीशन नजर आता है, देखने को मिलता है. Another important thing, all the three in Gujarat, Mohenjo-daro is the largest of all the Indus cities and it is estimated to have a spread over 200 हेक्टेयर. क्या देखते हैं? 200 हेक्टेयर में ये चीजें एक्सपेंड की गई. Some discoveries, you can say Birhana, the oldest Harappan sites, it is also discovered over there. Said to be the mounds of the, you can say, Birhana village on the bank of Ghaggar river is there. It is in Haryana. Dholavira is in the bank of Duni river in Gujarat, and the largest sites in what we can say Rakhi Gadi in Jind, Haryana. वर्तमान समय में जो देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? राखी गढ़ी का नाम आता है, जो कि जिंद हरियाणा में स्थित. Another important thing regarding this one is that you should have to remember over here, आपको remember रखना पड़ेगा. हरप्पा है, the river is what? It is Ravi. Region क्या है? पंजाब है, पाकिस्तान है. The period was, you can say, 1921 and it was discovered by Dayaram Sahni, or you can Madho Swarup Vats in 1926 and Wheeler in 1946. Second thing, Mohenjo-daro, it is where located in this region कौन सा है? सिंध है. The period is what? The period is 1922. It is Rakhel Das Banerjee. It is R.D. Banerjee, you have to remember, in 1924. Another person is what? John Mackay in 1925 and Wheeler in 1930-31. So these are the sites associated with this person. और ये बराबर UPSC एग्जामिनेशन में मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया जा सकता है. और दशक जगह का नाम है, दिस इज व्हाट फॉर सुरकोटाडा. दशक, इट इज व्हाट वी कैन से बलूचिस्तान एंड अरोल स्टेन इसकी खोज की. दूसरी चीज क्या देखते हैं? रंगपुर मेदार में है ये. नदी कौन सी? मेदार है. रीजन क्या है? गुजरात है. एंड इट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग 1931. MS Words discovered over there. Then the place is what? Indus Chanhudadu. It is Sindh in Pakistan. And what we can say, Mackay or NG Mazumdar discovered the sites over here. Another one is that Lothal. It is what? रोपर के बारे में मैंने बताया आपको, सतलज था. और it was the period of 1953. Then YD Sharma has discovered over this site. Then Kalibangan, it is Ghaggar river, राजस्थान में है. And अलकनंदा, है ना, अमल नंदा घोष ने इसकी खोज की थी 1951 में. LV लेनी और BK थापर, इन सबों के सहयोग से ये साइट्स को खोजा गया था. देन आलमगीरपुर क्या है? नदी कौन सी? हिंडन है, उत्तर प्रदेश है.
Y.D. Sharma discovered this site. And Ghaggar, it is in Haryana in 1974, R.S. Bish discovered this site. So this way you should have to remember about these sites because it is quite important from the examination. Now came to the point over that early origin and evolution of this site. What is that? There were four important stages or phases of the evolution of the site. Names, it is called pre-Harappan. The first one is that pre-Harappan. Then another one is what? It is early Harappan. Then the third one is what? The mature Harappan. And this is fourth one is what? The late Harappan. It is the downfall age, you can say, or it is the period of the downfall stages. आप कह सकते हैं. So this may be the question of your examination, that early Harappa, then mature Harappa, then late Harappan phase. If you talk about mature Harappan, it is what we can say the period of 1750 is there, because all the evidences we find out on the basis of archaeology. हम लोग किससे पाते हैं कि 1750 एक मच्योर फेज है, और उस मच्योर फेज में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, what way the development has taken place in this regard, we should have to study about there. The pre-Harappan stage is located in the eastern Balochistan. जो pre-Harappan पेज का जो स्थान है वो कहाँ पे located है? बलूचिस्तान में. The excavation at Mehergarh in 150 miles to the northwest Mohenjo-daro, it is a rival existence, you can say, pre-Harappan. ये क्या नजर आता है? Pre-Harappan culture. In this stage, the nomadic people began to lead and settle एग्रीकल्चरल लाइफ. क्या देखते हैं? नोमैडिक पीपुल एक एग्रीकल्चरल लाइफ को सेटल यहाँ. इन द अर्ली हरप्पन स्टेज द पीपुल लिव्ड इन लार्ज विलेज इन द प्लेन एंड देयर वाज अ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन इन द इंडस वैली ड्यूरिंग दिस पीरियड. ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन कंडीशंस क्या नजर आता है? अब देखो क्रिटिकल थिंकिंग यहीं पे आ जाती है. क्या देखते हैं कि इंडस वैली ड्यूरिंग द पीरियड इज व्हाट? ट्रांजिशन. इट इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. मतलब क्या है? बदलाव का फेज है, जब रूरल से हम लोग अर्बन की ओर आते हैं. एंड दिस हैज आल्सो बीन टेकन प्लेस ड्यूरिंग दिस साइट टू. एंड दिस साइट्स ऑफ आमरी एंड कोट डेंजी रिमेन द एविडेंस ऑफ द अर्ली हरप्पन स्टेज. सवाल पूछा जाता है कि अर्ली हरप्पन स्टेज कौन कौन सा था, तो जवाब क्या होगा? आमरी and this Kot Dingi, it is the major important site. It is located in Pakistan right now. The mature Harappan stage, the great city emerged as the Kalibanga. सबसे important ही नजर आता है Kalibanga. It was elaborated town planning, urban features we provide over here. अगर मैं सवाल करता हूँ कि urban features का उद्देश्य क्या हो गया, तो आपका जवाब क्या होता है? कंडीशन क्या नजर आएगा? The feature of the town were fully established. सबसे important चीज क्या देखते हैं? टाउन फीचर की व्यवस्था देखते हैं, वो टाउन फुल्ली. दूसरी खास बात क्या नजर आता है? देयर वी फाइंड ए प्रॉपर सिस्टम. सिस्टम का मतलब है पॉलिटिकल सिस्टम भी है, सोशल सिस्टम भी है, इकोनॉमिक सिस्टम भी है, कल्चरल सिस्टम इज ऑल्सो. एंड द प्लेस कालीबंगन इज नोन because of the black bangle we find over here. Due to black bangle we find over here. हम लोगों ने ब्लैक बैंगल पाया है, जिसके कारण इसे हम लोग कालीबंगन के नाम से जानते हैं. विद द एलेबोरेट टाउन प्लानिंग भी एलेबोरेट है. फीचर्स नजर आता है, ऐसा नजर आता है बहुत सारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सिटी भी है, इंडस्ट्रियल टाउन भी है, पॉलिटिकल सेटअप भी है. दिस इज व्हाट वी कैन से. दिस प्रूव दिस फेज ऑफ इवोल्यूशन. और अर्बन फीचर्स ये तथ्य किस चीज को शो करता है? इन द वेरी बिगिनिंग इट वाज आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस. तो कुल मिला के क्या जानते हैं? व्हाट एग्जैक्टली वी नो अबाउट ऑल द फीचर्स रिगार्डिंग दैट evolutionary process of the civilization also came to prominence by this time. उसके evolution होने का डेट है, उसके ग्रोथ होने का भी टाइम है, उसके मैच्योरिटी का भी टाइम है, और क्या देखते हैं? उसके डाउनफॉल का भी टाइम आ जाता है. दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड अर्ली हरप्पन साइट की बात अगर यूपीएससी सवाल पूछता है तो यू हैव टू रिमेंबर कालीबंगन, देन बनवाली, देन धोलावीरा कच्छ में है, देन राखीगढ़ी घग्गर रिवर में. तो दीज आर द बेसिक थिंग यू शुड हैव टू रिमेंबर. और जब मच्योर फेज की बात करते हैं, हरप्पा इज ए मच्योर साइट, मोहनजोदड़ो इज ए मच्योर साइट, चादुदारो इज ए मच्योर साइट, लोथल इज आल्सो अ मच्योर साइट. एंड लोथल इज व्हाट? इट इज अ प्लेस, इट इज नोन एज अ डॉकयार्ड. इसको हम लोग डॉकयार्ड के नाम से जानते हैं. एंड इट वाज आल्सो a major port city evolved over here. So this is also one of the significant part of urban culture or urbanization. Banwali, it is again located at Hisar, Haryana. Then Surkotada is in Gujarat, and Dholavira, you know it, and Rakhigadi is the biggest site ever we find in the region of Haryana.
तो धोलावीरा इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ओवर देयर, क्योंकि ये भारत में साइट्स है और इसके लोकेशंस को देखते क्या है, द सिटी हैज बीन बाइफरकेटेड अंडर द थ्री मेजर रीजन। धोलावीरा की विशेषता क्या नजर आती है, द सिटी हैज बीन सेग्रीगेटेड अंडर थ्री फॉर्म, क्या देखते हैं थ्री फॉर्म में। So this is also fortified, this is also fortified, and this one is what? This one is non-fortified town over there. So this is important feature we find about the Dholavira. Dholavira में एक और खास चीज नजर आती है, फर्स्ट टाइम वी फाइंड द साइन बोर्ड ओवर हियर। क्या देखते हैं, पहली बार साइन बोर्ड देखने को मिलता है। जैसे वर्तमान समय में अगर आप दिल्ली में इंटर कीजिए तो पता चलता है, लिखा हुआ होता है दिल्ली एनसीआर आपका स्वागत करता है। इफ यू टेक एंट्री टू द एनी अदर सिटीज एंड टाउन ओवर देयर, you can find that the signboard system is there. So this is quite significant and you should have to remember this part of that, क्योंकि ये सवाल ऐसे सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं। Now in the late Harappan state the decline of the Indus culture started. Late Harappan phase में क्या देखते हैं, Indus culture का declining start हो जाता है। This is again a significant feature. And the excavation at Lothal revealed this stage of evolution. और क्या देखते हैं, इस stage of evolution को वो reveal करते हैं। Lothal with its port was found much later and it was surrounded by massive brick walls as flood protection. क्या देखते हैं कि ये एक बड़ा ही massive brick walls रखा गया है, इस कारण के लिए flood के protection. This is again there. And the late Harappan field you can say Dholavira is a later Harappan phase, Rakhi Gadi is a later Harappan phase, Bhagwanpura is a later Harappan phase, Manda ये जम्मू में स्थित नॉर्दर्न साइट है, it is also a development of the late Harappan phase. And Chandigarh you can Sangol पंजाब में it is a late Harappan phase, and Daulatpur Methi हरियाणा में, Alamgirpur and Hulas, this is again the region which is located in the region of NCR Delhi. These are the important. So the Lothal remained an emporium of the trade between the Harappan civilization and the remaining ports of India and Mesopotamia. जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज नजर आता है, जो सबसे सिग्निफिकेंट फीट कहा जा सकता है, जो डेवलपमेंट का नजर आता है, वो क्या नजर आता है, लोथल के फीट। और लोथल की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या नजर आती है कि लोथल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं, लोथल की विशेषता क्या देखते हैं कि लोथल जो है कि नहीं, एक पोर्ट सिटी का डेवलपमेंट हुआ है, और ये पोर्ट सिटी के साथ साथ क्या देखते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल सिटी और इंडस्ट्रियल पोर्ट है, और इसमें इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी बातें की जाती है ना। शिव बहादुर सिंह, हेलो हाउ आर यू शिव बहादुर सिंह, आर यू वाचिंग दिस टीवी, एम आई ऑडिबल एंड क्लियर पार्ट ओवर देयर और नॉट, सारी चीजें नजर आ रही हैं क्या नहीं, क्या सुनाई चीजों को सुन पा रहे हैं या नहीं, इफ इट इज ओके देन इट इज अ नाइस पार्ट ऑफ दैट शिव बहादुर सिंह। So this is what we can say that Shiv Bahadur Singh Hill, this is important part over there, this match. So what important thing we find, the late stage, the decline of the Indus stage, क्या देखेंगे, late stage क्या है, फिर क्या देखेंगे, decline stage क्या है, it started from there. And the excavation of Lothal, it is very significant and important, revealed this stage of evolution, and Lothal with its port was found much later. It was surrounded by massive brick walls as the flood protection. और लोथल से शिव बहादुर सवाल पूछे गए हैं कि लोथल का जो ब्रिक है वो कैसा। तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कट बता दूं, सिंधु घाटी की सभ्यता में चार प्रकार के ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था। तो पहला ब्रिक्स होता था दैट वाज कॉल्ड सनबेक्ड, इट वाज कॉल्ड सनबेक्ड, धूप में पकाई हुई ईंट। जो दूसरी वैरायटी ऑफ ईंट होती थी वो क्या होती थी, फायर बेक्ड, आग में पकाई हुई, फायर बेक्ड, इट इज व्हाट फायर बेक्ड ब्रिक्स। जो तीसरी ब्रिक्स होती थी दिस वाज कॉल्ड सॉन ब्रिक्स, SAWN सॉन ब्रिक्स। और सॉन ब्रिक्स का मतलब क्या है कि आरी से काटी हुई ब्रिक्स। तो एट दैट टाइम वी आल्सो फाइंड देयर दिस इज कॉल्ड अ सॉ, और आरी से खींची हुई ईंट। इसका रीजंस क्या था, द ब्रिक शुड बी ऑफ ए डिफरेंट, the brick should have a different shape, and this brick used to you can say used to utilize on the corner for making the corner. So this is the fourth variety of bricks, and the fourth one is what, it is mud bricks, it is mud bricks. तो यूपीएससी सवाल अगर पूछता है
कि किस प्रकार की ईंट का इस्तेमाल किया गया था डॉकयार्ड बनाने में? योर आंसर शुड गो लाइक इट वाज ए फायर बेस्ड brick that was mainly used for making the dockyard or lothal. Or if the question comes to you, which kind of bricks were widely or extensively used for making the house, making the granary? Your answer should be it should be sun-baked bricks. Then the question may be asked like that too: which kind of bricks were utilized for the purpose of making the corner sharp? Your answer should be it should be a sawn bricks. SAWN sawn bricks. Saw का मतलब होता है हिंदी में आरी. So that thing you should have to remember over here. One more thing. Lothal remained an emporium of trade. Why it was emporium of trade? Because international trading activities were prevalent over here. Because most of the ships used to carry on their trade and business to the region of Mesopotamia. We find the evidence over there. This is important. Yeah. So Lothal was also an industrial town. We find the concept of the colonies at that place. Lothal was also set by you can say trading communities over there. लोथल को क्या खास बात नजर आता है कि लोथल में डॉकयार्ड है. डॉकयार्ड के साथ में कॉलोनी और इंडस्ट्रियल सिटी का भी प्रमाण वहां से मिलता है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है. फायर अल्टार जैसी भी चीजें वहां पे मिली. That is why Lothal is quite significant over there. And one significant thing you can correlate to the recent situation, Mr. शिव बहादुर सिंह, वो क्या होता है? उस समय में वो परंपरा थी किस चीज की? पोर्ट सिटीज की. और वर्तमान समय में भी पोर्ट सिटी की परंपरा अभी भी विद्यमान है. नाउ कम टू एक और वेरी इंटरेस्टिंग सवाल मैं करना चाहता हूं कि व्हाई इंडस सिविलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी. शिव बहादुर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी इंडस सिविलाइजेशन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट इट? इसकी सिग्निफिकेंट क्यों है? सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों जानकारी रखते हैं? क्योंकि बच्चे बराबर सवाल करते हैं पेरेंट्स हमसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ के होगा क्या, इस सिस्टम को जानकारी रख क्या, तो सवाल क्या होगा? तो दो चीजों पे ध्यान दो. सिंधु घाटी की सभ्यता को तब बहुत अच्छे से जाना जा सकता है जब दो चीज को सिर्फ आप जान लो सिंधु घाटी की सभ्यता की. पहली चीज क्या है? टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग. और दूसरी चीज क्या है? सी. अगर ये दो चीज को आपने जान लिया, टाउन प्लानिंग और सील के बारे में, तो द टॉपिक हैज बीन फिनिश. सिंधु घाटी की सभ्यता यहीं पे समाप्त हो जाती. कहा जाए कि व्हाई यू शुड हैव टू स्टडी अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन, आपका पहला जवाब होगा टाउन प्लानिंग. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग योर आंसर शुड बी सील्स. कारण क्या है कि अगर इस दो चीज को जान लेते हो तो सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता आप जान लोगे. सभ्यता का मतलब क्या होता है? सिस्टम. और ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है. यहाँ पे सिस्टम के नाम पर लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है. हर एक चीज का अध्ययन अध्यापन किस चीज पे आधार पे कर रहे हो? आर्कोलॉजिकल रिमेन्स पे, आर्कोलॉजिकल एविडेंस पे. तो आर्कोलॉजिकल एविडेंस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. टाउन प्लानिंग की व्यवस्था और दूसरी चीज, इस दोनों व्यवस्था के बाद जो अन्य चीजें आर्टिफैक्ट मिलता है उसे आप क्या कर सकते हैं शिव बहादुर? यू कैन को रिलेट ईच एंड एवरी पार्ट ओवर एंड यू कैन मेक अ क्वेरी. आप सवाल शिव बहादुर जरूर पूछ सकते हो कि सील्स क्यों जाना जाएगा या टाउन प्लानिंग क्यों जाना जाएगा. अगर सील्स की बात करते हैं, चूंकि सील्स से सवाल पूछे गए, सील्स से सवाल क्या पूछे गए हैं? व्हाट टाइप ऑफ सील्स वे आर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो जवाब आपका क्या होगा? डिफाइन द different shapes and size of the seals. This was the shape of the seals. Then again, this was the square shape of the seals. Then what we find? We find a rectangular shape of the seals. Then what we find? The circular shape of the seal. And again, we find the shape of the seal is of the cylindrical type. So these were the shapes we find the Indus Valley civilization. सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सील्स का शेप मिला है, ये सभी शेप्स का मिला है. और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सील्स बनाई जाती थी, बेसिकली इट वाज एस्टेटाइट. It was a kind of plaster of Paris. It was a kind of clay astatite. And the second thing is that we also find you can say bronze steel. We also find astatite steel. We also find gold. Then silver is also the part of that. So these are the seals we find over there, and these seals give enough information regarding Indus. And the second thing we find about that, the town. I'm going to discuss about that part also. Okay, so here is the significant part, the salient features of the Harappan civilization.
सिंधु सभ्यता की जो सबसे सेलियंट फीचर की बात क्या नजर आती है, इज important thing is what town planning. Town planning is one of the significant part of that. And the Harappan culture had its own system of town planning on the lines of grid system. The method and system is grid system, that is a street, then lanes, then cutting across the another almost right angle, thus dividing the city into several rectangular blocks. So what is important part we find over there? The base we find over here is what? Rectangle. Always keep in mind rectangle. And why rectangle? Because according to the engineering and technology, engineering part of that mechanism of engineering says about that, the maximum utility of a place can be drawn out by the system of making. आप शिव बहादुर आप जान रहे होंगे कि जितना भी बड़ा ऑडिटोरियम है या जितना भी बड़ा हॉल है, most of the time, most of the condition is on rectangular shape. So this tradition of rectangular shape, we have taken the engineering and mechanism of Indus Valley. And another part is what? It is grid system. What is grid system? So it is bifurcated on right angle. It is bifurcated on right angle. This is again significant. So this is east side, this is the western side, this is the northern side. And another significant thing we find over here, the entrance of the lanes. Normally all the houses used to construct, used to design. On what basis? It used to design, and the entry is taken from the back side of the part. This is important. Back side of the जो सबसे important चीज है शिव कुमार आप जान लो. What is important and significant that should be quite noticeable over here. क्या देखते हैं रेक्टेंगल पर अगर ये चीज को डिवाइड किया गया है पूरे नगर को पूरे शहर को, तो देखते क्या है, सपोज ये पोर्शन है, एंट्री कभी भी आगे से नहीं होती, हमेशा बैक ऑफ द स्ट्रीट. और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, कारण क्या था बैक ऑफ द स्ट्रीट का? कंडीशन रीजन यही था कि साउंड पॉल्यूशन नहीं हो, डस्ट पॉल्यूशन नहीं, कोई स्मोक जैसी हो. दैट इज द रीजन व्हाई द एंट्री वाज मेड फ्रॉम द बैक साइड और बैक डोर और व्हाट वी कैन से बैक स्ट्रीट. But in the present time, if you see about the entrance and exit of the houses, it is from the front of the road. और उसी को माना जाता है कि बहुत एडवांस है, बहुत कॉस्टली है या बहुत ज्यादा डेवलप पार्ट है. So this is the intricacy regarding. ये सबसे बड़ी विशेषता नजर आती है. और वर्तमान समय में जानकारी के लिए कि कैसे हम लोग लाभान्वित हो सकते हैं, जो पास्ट में सिंधु घाटी की सभ्यता में जो डिजाइन का पैटर्न और जो स्ट्रक्चर का पैटर्न था, जो एक सिस्टमेटिक वे से है. You can find this kind of things in a systematic pattern in the present time. Chandigarh is a what? Design city and what we can say planned. So that evidence you can find over there. Another important thing, conditions, the house where you can say design as segregated under two parts. दो भागों में बटे हुए थे, चाहे हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, लेकिन जब धोलावीरा की बात करते हैं, it is divided into three parts. So one happens to be the fortified city and another happens to be the non-fortified. So the fortified city used to reside by the elite section of the society. ये स्थिति कब को भी प्रस्तुत करता है कि elite section of society upper end में रहते होंगे और lower society जो था कि नहीं, वो non कहा जा सकता है कि fortified थी. This was the important significant part over there. The large scale used in the burnt bricks. क्या देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो burnt bricks का इस्तेमाल किया गया, almost all kinds of construction and the absence of a stone building. एक सबसे important चीज क्या देखना है कि absence of a small stone building. So stone was absent in the early phases, but in the latter phase what we see that धोलावीरा जो कि भारत में है, we find the evidence of a stone. हम लोग क्या देखते हैं, बिल्डिंग जो है स्टोन के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट की गई है धोलावीरा से. और यहीं से यूपीएससी का क्वेश्चन निकल करके कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में स्टोन आए और किस कंडीशन में ब्रिक्स थे. और ब्रिक्स भी क्या थे बेक्ड ब्रिक्स भी थे और अनबेक्ड ब्रिक्स. तो ये दोनों की संभावनाएं थी उस पीरियड, क्योंकि प्रमाण मिलता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. Another important thing is that another remarkable feature was that underground drainage. ये सबसे बड़ी विशेषता थी. इट इज व्हाट? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम. और अभी मेट्रोपोलिस सिटी की बात अगर करते हैं, दिल्ली, कलकत्ता है, मद्रास है, उन समूह की अगर आप बात करते हैं, talk about that one, what we find during the rainy season, we find that that city is completely. So what is the concept of here is that
मेन होल, इट इज व्हाट मेन होल वी आर देयर। और नगर का सारा पानी इस मेन होल में आता था। और नगर का सारा पानी आने के बाद पानी डाइवर्ट होता था दूसरी जगह टैंक में, ताकि आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट, treatment of the water, it is distributed for the purpose of irrigation and other part of that. वर्तमान समय में क्या होता है? वर्तमान समय में देखते क्या है, जितना भी नगर का शहर का पानी है वो सारा का सारा पानी, चाहे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, यानी उसका एग्जिट कहाँ होता है? नदी। तो आप सोचो कि कभी भी गवर्नमेंट गंगा एक्शन प्लान या जो भी प्लान सामने में रखा गया है, क्या कभी भी कामयाब हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में ये प्लान कामयाब नहीं। This is again a very, very important and significant thing you should know about. Another remarkable feature is that underground drainage there, and houses and the street drain were covered by the stone and slab. एक और विशेषता मैं यहाँ बता देना चाहूंगा मिस्टर शिव बहादुर सिंह को, ये बताना चाहूंगा कि जो ड्रेन्स थे ना, ड्रेन्स तीन प्रकार की बनती। तो पहला प्रकार ड्रेन का होता था, इट वाज अ वाइड ड्रेन एंड कवर्ड विद द स्लैब। एक ड्रेन होती थी बड़ी वाली, तो स्लैब से क्या किया जाता था? कवर्ड कर। तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्रेन होती थी, वो क्या होती थी? ओपन ड्रेन। वॉज ओपन ड्रेन, ताकि उस ड्रेन को आप आसानी से साफ कर। तो तीसरी ड्रेन होती थी मेजर ड्रेन, तो तीसरी ड्रेन होती थी, उसको सोकपिट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। गड्ढा रखते थे और पानी इसमें आ जाता था, निकाल देते। और जो तीसरी ड्रेन मिलती है घरों में होती थी वुडन ड्रेन, वुडन ड्रेन। और वर्तमान समय में क्या देखते हैं? देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ड्रेन्स इन द रूम्स। रूम में ड्रेन की प्रथा नहीं है। एंड इवन द बेस्ट बिल्डिंग यू विल फाइंड दैट आफ्टर क्लीनिंग फ्रॉम द वाटर, द रूम्स में बी लॉक्ड विथ वाटर, और समटाइम इट इज, यू कैन से, वाटर retain at that place. So at that time, during this Indus Valley civilization, wooden drain were there, लकड़ी की ड्रेन होती थी, जिससे क्या देखते थे? रूम का भी पानी बाहर। So in this condition, we are lagging behind of Indus, the primitive civilization of the ancient, the proto-historic. Another important construction we find over here is that Mohenjo-daro, we find the Great Bath over, and measuring 39 feet, and length is what? 23 feet, breadth and 8 feet depth. This floor of the bath is made up of burnt bricks. और क्या देखते हैं? ये यूपीएससी सवाल में पूछा कि जो ग्रेट बाथ है, और ग्रेट बाथ में मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ ब्रिक्स किस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है? योर आंसर शुड गो लाइक दैट, फायर बेक्ड ब्रिक्स देयर। Even the question has been also asked that Lothal is a dockyard, and most of the time the fire baked bricks were used for the Lothal dockyard. And similarly, for this great bath, we also use, or what we can say, the people of Indus Valley people used over here that fire baked bricks. और यहाँ पर ईंट जो है कि नहीं, पकी हुई ईंट का इस्तेमाल किया। तो दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर हियर। इस चीज को काफी सिग्निफिकेंट रूप में समझेंगे। और अनदर थिंग, द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहन, इसमें एक और खास बात बता दें, ग्रेट बात की बात बता दें मिस्टर बहादुर। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, प्लीज आंसर इट ऑल्सो, सो दैट आई कैन आस्क टू यू, एंड इट विल बी इंटरेक्टिव सेशंस विद, एंड इट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आती है? ग्रेट बात की परंपरा शुरू से ही। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग दैट इन द प्रेजेंट सिनेरियो? नदी, एबुलेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। अभी भी कोई भी शुभ काम करने से पहले व्हाट पीपुल यूज टू डू, पीपुल यूज टू टेक बाथ ओवर देयर। लेकिन बात की विशेषता क्या नजर आती है? सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां के साथ में जो कॉर्नर हैं, उन सभी कॉर्नर पे रूम्स दिखाए गए हैं। शायद इसका पर्पस होगा तो लोगों को वस्त्र को चेंज करने की प्रक्रिया होती हो। That is the possibility at that time, and present time it is also prevailing in our society. वर्तमान में भी हम मेरे सोसाइटी में ये चीज। दूसरी खास बात क्या देखते हैं कि पानी के आने का रास्ता अलग था, पानी के जाने का रास्ता अलग था। नॉर्मली व्हाट वी कैन से दैट द पॉल्यूटेड वाटर एंड द वाटर गेट contaminated, it is removed from the main sides and it also take entry to the other side. क्या देखते हैं? एक तरफ से अच्छा पानी, शुद्ध पानी आता था, दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि जो गंदा पानी था वो बाहर निकल जाता था। दिस वाज द ब्यूटी ऑफ व्हाट Mohenjo-daro's great bath. So this is again important part over there. Another important thing, the largest building in Mohenjo-daro is called granary. It was measuring 150 feet length
and 50 feet breadth, but the citadel Harappa is 6 granary. और क्या देखते हैं, हड़प्पा के सिटाडल में 6 ग्रेनरी देखने को। और ये ग्रेनरी की विशेषता क्या है, दैट हैज बीन शोन इन 6 इन ए रो। ये जो है कि नहीं 6 रो में 6 है। और इसकी विशेषता क्या है, इस ग्रेनरी के बीच में गैप है, रास्ता है, या स्पेस दिया गया ताकि सन रेज लगे, हवा लगे, एयर और वाटर उसमें लगे, इसके कारण अनाज खराब नहीं हो। एंड देयर शुड बी ए सिस्टम, ए सिस्टम शुड बी मेंटेन्ड ओवर हियर। और देखते क्या है कि एक मेंटेन है, एक सिस्टम भी पूरी तरह से मेंटेन है। उसकी विशेषता क्या नजर आती है, उसकी विशेषता ये नजर आती है कि अगर कोई भी कीट है या कोई भी इंसेक्ट पेस्ट है तो वो एक से दूसरे के साथ में कहा जा सकता है कि एंट्री नहीं होगी। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट नोटिसेबल पार्ट वी हियर। इज इट क्लियर टू यू? नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ व्हाट, कम टू द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द हड़प्पा की जो बात कर देते हैं तो इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं। वन थिंग इज क्वाइट सिग्निफिकेंट ओवर देयर, एक चीज क्वाइट सिग्निफिकेंट है इन सारे पहलुओं में। देयर वाज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने नजर, वो क्या नजर आती है। If you find the history of all time, you will find that agriculture was the main economic all the time. कृषि जो है कि नहीं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि ही इसकी विशेष व्यवस्था थी। ओके, सत्यम मिश्रा यू आर वेरी लेट, विकेश पासवान यू आर ऑल्सो वेरी लेट, शिव बहादुर सिंह रिसेंटली यू हैव ज्वाइंड ओवर हियर। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर देयर, कंडीशंस क्या नजर आता है। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक फैक्ट, इकोनॉमिक फैक्ट। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं, प्लीज आप इंटरेक्टिव मेरे साथ हो जाओगे, इट वुड बी ए वेरी बेनिफिशियरी पार्ट फॉर यू। इफ यू टॉक अबाउट द व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था कहां से कहा जा सकता है प्रोक्योर होती है। भारत की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति में आपके पर कैपिटा इनकम से लेके हर चीज का सबसे ज्यादा बेनिफिट या सबसे ज्यादा एडवांटेज किस सेक्टर से होता है। If I ask you a question to Shiv Bahadur, Satyam Mishra and Vikesh Paswan, what would be your answer? What would be your answer? भारत में अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है किस सोर्सेज से आता है? Could you tell me प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और व्हाट वी कैन से टर्शियरी सेक्टर, व्हाट इज दैट? तीनों में से क्या होगा? तो एग्रीकल्चर ऑलवेज एक, अभी जो कंडीशंस देखते हैं एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारी चीजें आ गई हैं, इन्वेस्टमेंट एंड पार्ट। So all the time we find that agriculture was the main economic stay. It was the main economic stay of what? Income. अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका होता था? एग्रीकल्चर का होता। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में देखो तीन चीजें सामने नजर आती हैं। तो पहली चीज नजर आती है वो ट्रेड है, कॉमर्स है और इंडस्ट्री है। तो दूसरी चीज नजर आती है इनलैंड ट्रेड है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में। और तीसरी चीज क्या नजर आती है कि तीसरी चीज नजर आती है एग्रीकल्चर। तो पहली बार क्या देखते हैं, व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वी फाइंड द ट्रेड एंड कॉमर्स वाज ए डोमिनेटिंग फील्ड, इट मोस्ट ऑफ द टाइम सरपास एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्योंकि कारण क्या था, ट्रेडिंग इनका बहुत स्ट्रांग था, इसकी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी, इनका जो अदर पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, चूंकि बहुत सारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज मेसोपोटामिया से मिल रहे हैं हम लोगों को, उससे शो होता है कि उनका जो है कि नहीं एक्सटर्नल ट्रेड वाज वेरी मच स्ट्रांग ओवर देयर। तो दैट इज सिग्निफिकेंट पार्ट। आइए मैं आगे स्टडी। देयर वाज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल द स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट एंड ट्रेड। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है, एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट agriculture were surpassed by trade and commerce. The reason was that so many kind of industries were there. बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ जाती, और इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, वो मेटलर्जी। मेटलर्जी साइंस एंड ब्रोंज वाज फाउंड ओवर हियर। क्या टेक्नोलॉजी क्या आ गई थी? ब्रोंज। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं आप तीनों से, शिव बहादुर सिंह, सत्यम मिश्रा और विघ्नेश, ये ब्रोंज बनता कैसे? हाउ
How did this bronze is prepared? Bronze बनता कैसे? Could you tell me about it? How the bronze are, you can say, developed? How it is prepared? And it is an alloy. Bronze क्या है? Metal नहीं है. It is an alloy. So what we can say? First time in the history of the world, bronze technology came to prominence with the ideas and development of what? Development of Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization को सबसे पहली बार क्या देखते हैं? मेटलर्जी साइंस का ज्ञान हो जाता है। सत्यम, जल्दी से बताओ कि ब्रोंज कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये यूपीएससी 2006 का एक सवाल। हाउ डिड ब्रोंज इज प्रिपेयर्ड? ब्रोंज को कैसे तैयार किया जाता है? आई वांटेड आंसर फ्रॉम योर साइड। जल्दी से आप सवाल का जवाब दो। विकेश कुमार, विकेश पासवान, आप भी मेरे सवाल का जवाब दो। शिवम बहादुर, आप यू आर एकदम कंप्लीटली स्टिल हो, आप इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो। वेदर यू आर अवेलेबल और नॉट आई कांट से अबाउट इट, प्लीज लेट मी नो। जल्दी से जवाब दो। एनीवन एल्स, तीनों में से कोई भी एक, 30 सेकेंड इज गिवन टू यू, बिकॉज इसके बाद भी मैं सवाल करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। सत्यम मिश्रा, प्लीज लेट मी नो। जल्दी से जवाब दो, यस और नो, कुछ भी जवाब दो ना। जानते हो तो जवाब दे दो, नहीं जानते हो तो भी जवाब दे दो, ताकि मैं आगे बता सकूं और डिटेल में मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो, प्लीज। विकेश पासवान, सत्यम मिश्रा, शिव बहादुर सिंह, मैं आप तीनों से सवाल पूछ रहा हूं ताकि मैं आगे बता भी तो सकूं आपको। बच्चे घबराते क्यों हैं इससे? डोंट बी, यू कैन से स्केयर्स अबाउट दैट। इसके बारे में जरा भी चिंता मत करो। What should be the answer to you? Please tell me. Could you tell me that are you going to appear this year for the UPSC prelims? Anyone else? Please let me know. Please let me know. Satyam Mishra, Bikesh Paswan, Shiv Bahadur Singh, Rakesh Paswan, Rakesh Anamika also. Please let me know. So you people are still at this time. यार कुछ तो जवाब दे दो। So the combination of what? The combination of tin plus copper. तो क्या देखते हैं? द पीपुल हैव नॉलेज अबाउट द टीन, द पीपुल हैव नॉलेज अबाउट द कॉपर, एंड व्हाट इट मेक्स ब्रोंज। एंड वी फाइंड ए लॉट ऑफ इंडस्ट्री ओवर देयर, और कई इंडस्ट्री हम लोग पाए हैं किस चीज की? ब्रॉन्ज की। एंड मेटल क्राफ्ट वाज आल्सो important feature over there, because we find mother goddess. What we find? We find the bronze dancing girl of mother goddess we find over there। और ये भी यूपीएससी का सवाल पूछा गया है, और सवाल पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती है। Is it clear to you? Now wheat and barley were the main crops grown beside the sesame, mustard and cotton। इस चीज को याद रखना, sesame, mustard and cotton, these were the other plantation or what we can say agriculture activities। Animal like sheep, goats, buffalo, the use of horse is not yet to be established over there. One thing is again very much clear to you, the description of horse did not find over here। And where we find the description of horse, जल्दी से बताओगे क्या? Description of horse की संज्ञा, description of horse के बारे में जानकारी कब मिलती है? During the Vedic। So these are the basic things you should have to understand about that, and try to interact with me, otherwise मजा नहीं आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। Animals like sheep were established, and specialized groups of artisans including, listen to me, by this time the concept of goldsmith emerged, the concept of brick maker emerged, the concept of stone coat cutters emerged, and the concept of weavers also came to emerge, and boat builders also, and what we can say, terracotta manufacturing of bronze, copper vessels we find at this time. An example of metal craft. Metal craft was one of the significant we find over here. In the sense of metal craft, we find dancing girl, we also find the bull, we also find some toys that is made up of metal part of that. So that is why the metallurgy science came to prominence during this period. Another thing, gold, silver ornaments are found in many places. Pottery remains plain in the same place. And another important thing is that manufacture of wide variety of semi-precious stone. By this time, we also find the concept of semi-precious stone. Internal trade was also extensive during this period. So this way, what we can say, we can say that trade, commerce, and other activities were very important part of that. And the mechanism to control this system was also one of the significant part of that। क्योंकि आप लोग यार इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है।
अगर मैं कहूं कि क्या कारण था कि कि कंट्रोल सिस्टम वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, तो द मर्चेंट्स वेयर आल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड, इसका कारण क्या था कि ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप था। तो आपका जवाब क्या होगा? वी फाइंड वी फाइंड वेट एंड मेजर। क्या देखते हैं? माप तौल का बटखरा जो यहाँ मिलता है, एक यूनिफॉर्म बटखरा मिलता है। माप तौल का जो बटखरा मिलता है वो यूनिफॉर्म मिलता है। फिर मेजरिंग स्केल जो यहाँ पे मिलता है वो बराबर मिलता है। व्हाट इट शोज अबाउट दैट ए कंट्रोल मैकेनिज्म, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तभी तो यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर है। ऐसा नहीं है कि धोलावीरा में 200 ग्राम है और कहा जा सकता है कि सुरकुटाडा में 500 ग्राम है। नो, uniformity of, you can say, weight and measure shows about that a very strong regulatory system must be prevail, और ये इस तथ्य की पुष्टि करता है कि रेगुलेटरी सिस्टम बहुत बहुत स्ट्रांग होगा, ताकि सामान्य एक प्रकार का यूनिफॉर्म अगर माप तौल का बटखरा है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कंडीशन क्या नजर आता है, इफेक्टिव मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड थिंग इज दैट कंट्रोल मैकेनिज्म वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग। इसीलिए क्या देखते हैं कि जो मीटर है या साइज है या गज जो अभी वर्तमान समय में करते हैं, उस पीरियड में भी बहुत स्ट्रांग था, बहुत कहा जा सकता है कि एस्टेब्लिश पार्ट पर था। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द मर्केंटाइल कम्युनिटी मस्ट हैव कंट्रोल द कंप्लीट इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस एक्टिविटी। अनदर थिंग क्या देखते हैं, इंपोर्ट्स क्या क्या होती थी। इंपोर्ट्स यानी कौन कौन चीज को वो इंपोर्ट करता था और कौन कौन चीज को एक्सपोर्ट करता था, ये सवाल पूछा गया। तो क्या देखते हैं, कर्नाटक से कोल आता था, अफगानिस्तान से चांदी, पर्शिया से, ईरान से भी आती। सिल्वर कहाँ से आ रहा है? अफगानिस्तान से आ रहा है, साउथ इंडिया से। कॉपर कहाँ से आ रहा है? खेतरी, राजस्थान, स्टिल इट इज वेरी फेमस पार्ट ऑफ दैट। खेतरी बलूचिस्तान से, क्या बलूचिस्तान से भी आता था तांबा। और टीन कहाँ से आ रहा है? अफगानिस्तान से। वर्तमान समय में टीन की बहुत ज्यादा कमियां हैं, लेकिन बिहार का कुछ है क्योंकि लिमिटेड है रिसोर्सेज। लेपिस लेजुली और कहते हैं सफायर, ये क्या है? पत्थर है, फिरोजा पत्थर को लेपिस लेजुली कहा जाता है। ये बल्ख और बदख्शा अफगानिस्तान से आता है। कैडेट है, सेंट्रल एशिया से पत्थर आता है। स्टेटाइट क्या देते हैं? शहरकोटा ईरान से आता था, कैथरी हिल से आता था पाकिस्तान। एमेथिस भी स्टोन है, कहाँ से आता था? महाराष्ट्र से। और अगेट पत्थर भी है, चलकेडोनिस, ये सौराष्ट्र से, और कहा जा सकता है वेस्ट इंडिया। So these were the element, these were the metal, these were the objects, or what we can certain precious metals of the trading activity which used to import from the different region of the country. Another thing, trade was of the barter type, और ट्रेड की व्यवस्था क्या थी? बार्टर टाइप की। फॉरेन ट्रेड वाज मेनली कंक्लूडेड विद मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। जो विदेशी ट्रेड होती थी कहाँ से? मेसोपोटामिया, from the you can say seafaring activities. We also find this kind of seals, सील के ऊपर में ऐसे ऐसे बूट बने हुए। दिस ऑल्सो शोज अबाउट दैट दे हैव द टेंडेंसी of developing this part of that, and as and when it is needed, it is to be nullified. So this is important thing we find over here. Then another important thing, gold, copper, tin and several semi precious stone were imported। कुछ कुछ चीजों को इंपोर्ट किया जाता था। मेन एक्सपोर्ट्स वेयर, एक्सपोर्ट जो हो रहा है क्या देखते हैं हम लोग? व्हीट है, बार्ली है, पीस है, ऑयल है, वैरायटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट है। जिसमें क्या देखते हैं? पोट्री है, बीड्स है, टेराकोटा है। These were facilitated at that time also. Now come to the point of what? Social condition. Right? अगर हम सोशल लाइफ की बात करते हैं, व्हाट इज पार्ट ऑफ सोशल लाइफ? मार्बल्स, बॉल, डाइस वेयर द गेम्स। क्या देखते हैं? उसी पीरियड में नजर आता क्या है कि we used to play the games on the basis of on the basis of on the basis of different ideas and gain part of that. Then the fishing was a regular occupation, while hunting, bull fighting was other the pastime. क्या देखते थे? आदमी को टाइम पास करने का पेस्ट टाइम की भी व्यवस्था होती थी। और सोशल लाइफ की जहां तक बात करते हैं, सोशल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं? ड्रेस सेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। क्या देखते हैं? ड्रेस सेंस ऑफ बोथ, किसका? मेल एंड फीमेल दोनों का देखते हैं। इफ यू कंपेयर टू द मेल और यू कंपेयर टू द फीमेल, क्या देखते हैं? फीमेल की जो कहा जा सकता है डेकोरेशन का सामान है, लिपस्टिक से लेके ब्रॉन्ज मिरर भी देखने को मिलता है। तो ऑल द थिंग वी फाइंड ओवर हियर। और खास करके पेंडेंट की सबसे बड़ी प्रचलितता थी, सबसे ज्यादा प्रचलित था तो क्या था? पेंडेंट था।
और वी फाइंड पेंडेंट इन डिफरेंट फॉर्म, जैसे लेपिस lazuli के फॉर्म में, हार के फॉर्म में। पेंडेंट क्या देखते हैं, हार के फॉर्म में। और डिफरेंट टाइप और डिफरेंट शेप्स की मोतियां भी डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट शेप्स की देखने को, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट शेप्स की। So this is again a significant part. The people of those region, those having not such facilities over there, इस प्रकार से जो facilities उसको देखते हैं, वो चीजें मिलती हैं। Another important thing is that the figure of a dancing girl from Mohenjo-daro made bronze in a remarkable workmanship, and a statue of a man in the beard made the limestone. क्या देखते हैं, लाइमस्टोन पे आदमी के बियर्ड, दाढ़ी बना हुआ चित्र देखते हैं। और क्या देखते हैं, ब्रॉन्ज की स्टैचू नजर आती है, खास करके डांसिंग गर्ल की, उसकी भी बहुत बड़ी महत्वता। We also find the potteries of the Harappa in another specimen and fine art of the Indus people, and the pots, jars were painted on the various design. क्या देखते हैं, पोट्रीज देखने को मिलती है सिंधु घाटी की। और पोट्री मैंने कल के क्लास में बता दिया था कि पोट्री की परंपरा नियोलिथिक स्टेज, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में जो पोट्री मिलती है वो रेड स्लिप और ब्लैकवेयर है, और पोट्री के ऊपर में विभिन्न प्रकार से चित्रकारियां दिखाई गई हैं। और इस चित्रकारियां की जो स्टाइल है, जो फेज है, उसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल डिजाइन। 3 डिजाइन में है। एक जो डिजाइन है ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, जो मैं अभी बना रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन है। जो दूसरा डिजाइन है दैट इज नोन एज मैट पैटर्न, उसको कहते हैं मैट पैटर्न। दिस इज कॉल्ड मैट पैटर्न ऑफ, and this matte pattern developed different way of। इसका कंडीशन क्या है, इसको कहते हैं फिश स्केल, फिश स्केल, मछली के चिमटा की तरह तो डेवलप करने। So these are the patterns crossed by them different। So this way the development process has also gone very high। क्या देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस इस पीरियड में आर्ट एंड क्राफ्ट का काफी हाई चला। We find different type of toy, even though जो सबसे बड़ी बात है, quite interesting, आप लोग तो यार विकेश पासवान आप भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, सत्यम मिश्रा आप भी नहीं इंटरेक्ट कर रहे हो, ताकि मैं और चीजों को बताऊं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी के कंटेक्स्ट में आप जानोगे, पहली बार वी फाइंड ऑल्सो द विसल। विसल आपने देखा है, जो ट्रैफिक पुलिस विसल बनाता है। वी फाइंड ऑल्सो द एविडेंस ऑफ विसल, वी फाइंड ओवर हियर, यहाँ पे विसल जैसी चीज का भी प्रमाण देखने को। तो the pictorial motive consisted of geometrical pattern, और जितने भी पिक्टोरियल मोटिव शो किए गए हैं वहां पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न का शुरू हो जाता है नामाकरण। वन सम पोट्री पीसेस फिगर फिश पिकॉक आर फाउंड ओवर देयर। कुछ कुछ में क्या देखते हैं, मयूर का चित्र। किसी किसी चीजों में हम लोगों को क्या मिला है, मयूर का भी चित्र देखने को। पैटर्न में क्या देखते हैं, मयूर का भी चित्र देखने को मिला। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इंडस वैली पीपुल। और ये इंडस वैली पीपुल का एक कल्चरल डेवलपमेंट, या कह सकते हैं कल्चरल विकास की बात कर सकते हैं, तो इस काल में देखने को मिलता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर हियर। आप लोग यार इंटरेक्ट नहीं हो रहे तो बात बन नहीं रही है। शिव बहादुर सिंह प्लीज इंटरेक्ट टू मी, एंड सत्यम ऑल्सो प्लीज इंटरेक्ट मी एंड आस्क क्वेश्चन टू मी। Vikesh Paswan, please let me know about that, because I am going to discuss each and everything on a pragmatic basis and the possibility of asking the things in the examination। मैं जो क्लास ले रहा हूं, मेरे क्लास लेने का पर्पस सिलेबस नहीं खत्म करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, आपकी सोच को, आपके पैटर्न को डेवलप करना। अगर मैं सवाल पूछूं विकेश कुमार कि सबसे पहली बार ज्योमेट्री का विकास कहां से हुआ, तो जवाब कहां से दो? Where did the development of geometrical process or geometry begin to the you can say system on which the India adopted now a time? अगर ज्योमेट्री नहीं होगा तो कोई सिस्टम नहीं होगा, विकेश कुमार ये जान लो, सत्यम मिश्रा ये जान लो। अगर ज्योमेट्री नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। You can't do anything else. You can't sit over there. You can't make out a chair also over there. And the system of geometry begins from industrialization. And when you would have been crossed through the school stages, जब आप स्कूल पहली बार गए होगे, या फिर प्रेप में होगे, या केजी या 1 में होगे, तो सबसे पहली बार आपको बताया गया होगा शेप्स। सबसे पहली बार क्या बताया गया होगा, शेप्स के बारे में जानकारी दी होगी कि इसको शेप्स का। एंड दिस शेप्स केम टू प्रोमिनेंस फ्रॉम द इंडस वैली।
शेप का ओरिजिन कहाँ से होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड दैट इज व्हाई द कंडीशन इज व्हाट? ज्योमेट्री. These all shapes are designs are what? It is geometrical size. So you should have to understand about that. आपको समझना होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने का लाभ और यूपीएससी ने इसको सिलेबस में क्यों इंडक्ट किया है कि आपको हर चीज की जानकारी मिल जाती है. सोसाइटी की मिल जाती है, इकोनॉमी की मिल जाती है, लैंग्वेज की मिल जाती है, स्क्रिप्ट की मिल जाती है, यहाँ तक कि कैलकुलेशन की मिल जाती है. और कैलकुलेशन में जो प्रमाण मिला है स्क्वायर रूट का, वी फाइंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, फाइंड इन इंडस वैली से. सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या देखते हैं कि वर्गमूल जिसे हिंदी में कहते हैं, स्क्वायर रूट का भी प्रमाण वहीं से मिलता है, इंच मीटर का भी प्रमाण वहीं से मिलता है. तो दिस इज द रीजन वी शुड हैव टू स्टडी ओवर. यार कुछ तो मेरे सवाल का जवाब दे दो. ये थोड़ा सा तो सत्यम जी इंटरेक्ट कर लो आप, सत्यम मिश्रा जी एंड विकेश पासवान जी, कुछ सवाल भी करो, कुछ समझो भी, कुछ जानो भी. मजा कैसे आएगा यार पढ़ाने में? इट इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू दिस. Another major development which has taken place over here is what? The pottery of Harappa is also very much famous part of that. The pictorial motive is also very important part over there. Script की बात करते हैं. If we talk about the script, a script is called pictographic. हमेशा याद रखना क्या है? Picto. The script is what? Pictographic. Pictographic. पिक्टोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? चित्र शैली. इफ यू टॉक अबाउट दैट, इट इज व्हाट? चित्र शैली. चित्र शैली का मतलब क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर देयर? इफ यू टॉक अबाउट द चित्र शैली, लाइक दिस, लाइक दिस. तो दिस इज व्हाट? चित्र शैली. इट इज येट टू बी डिसाइफर. और इसे कहा जाता है फोटो फॉस्डन मेथड भी कहा जाता है. और ये चित्र शैली लिखी जाती थी कैसे? बाएं से दाएं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. और इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल. Bidirectional. It was also called bidirectional. It is also called bidirectional. यूपीएससी सवाल पूछेगा तो जवाब दे देना bidirectional. From left to right और left to right के साथ में bend कैसे हो रही है, that you can answer it on the examination. And the language of the Harappan was Dravidian मानते हैं लोग. Our scholars provide different views connecting to the Harappan script. यानी ब्रह्मी की भी बात करते हैं, लेकिन it is not the part of that. Now come to the point of what? Religion. What is the religion? The chief male deity was Pashupati, was important part, जिसे हम लोग प्रोटोशिवा भी कहते हैं. And what we can, two horn है, rhinoceros की बात करते हैं, buffalo है. These are the important things we find over here. Apart from that, mother goddess we also find over there. Then lingam is also there. Then the genital organ of women is also there. Genital organ of women की सिस्टम क्या देखते हैं? बेरियल मेथड है, दफन करने की विधि है. एंड द पोस्ट क्रिमेशन इज ऑल्सो फाइंड ओवर हियर. मोहनजोदड़ो. एट लोथल द बेरियल पिट वाज लाइंड टू द बर्न्ड विक्स, इंडिकेटिंग यूज ऑफ कॉफिन्स. क्या देखते हैं? कॉफिन्स की व्यवस्था है. वुडन कॉफिन्स वी आर ऑल्सो फाइंड. द प्रैक्टिस ऑफ पॉट बेरियल इज ऑल्सो फाइंड विद द हरप्पन सीजन ओवर देयर. दिस इज अगेन अ सिग्निफिकेंट फीट ओवर देयर. Then the decline of the Harappan culture. There were unanimous view pertaining to the Harappan. You can view over here. It is what? Natural calamities like recurring flood, drying rivers, or decreasing fertility of the soil. This was one of the important reasons over there. Wooden article would have got destroyed in the fires. Fire rivalry was another important feature over there. Rivalry was important feature over there. Other important thing what we find over here, natural calamity. नेचुरल कैलामिटी भी एक बहुत बड़ी बात है. राइवलरी जरूर सिविल वॉर जैसी चीज हो. अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द स्कॉलर व्हाट वी कैन, फाइनल ब्लो वाज डिलीवर्ड बाय द आर्यन इन्वेजन और डिस्ट्रक्शन इन द ऋग्वेद की बात में कही जाती है. ह्यूमन स्केलेटन की भी बातें कही गई हैं. उसके बाद आर्यन हैड सुपीरियर वेपन्स. आर्यन के पास क्या है? वेपन सुपीरियर था, जिसके कारण उनको डिफीट किया गया. अनदर थिंग इंपॉर्टेंट, हरप्पन साइट्स के बारे में डिस्कस मैं पहले भी कर चुका हूँ. तुथल अदर कर चुका हूँ. और कुछ हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं. अगर आप जवाब दे देते हैं तो वेल एंड गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज फॉर मेकिंग ब्रोंज स्टैट्यू ड्यूरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन? इसमें जो मेथड है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक. लॉस्ट वैक्स टेक्निक में ब्रॉन्ज की प्रतिमा भी मिलती. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टेराकोटा? इट इज लाइक ए क्ले अर्थनवेयर एंड इट इज a type of earthenware. What is that? Clay based unlaced glazed ceramic where the fireware wrote that condition. तो तीसरा क्या है? द टेराकोटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म आर क्रूड इन इंडस वैली.
एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जवाब इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव की बात। अनदर थिंग, द बस्ट ऑफ बियर्ड मैन वाज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट? जवाब क्या होगा? हड़प्पा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? द स्टोन स्कल्पचर मेल टॉर्सो वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये सारे के सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल के जवाब, अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तो सवाल के जवाब आप कैसे दोगे? प्लीज टेल मी, इस सवाल के जवाब देंगे क्या? द स्टोन स्कल्पचर ऑफ मेल टॉर्सो वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स? जवाब देंगे आप लोगों में से कोई? नहीं तो फिर सवाल का जवाब मजा तो नहीं आ सकता है यार, कैसे इंटरेक्ट होंगे, है ना? अब तक मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस? इसमें से कमर्शियल पर्पस के क्या यूज किए जाते थे? कुड यू टेल मी? ब्रॉन्ज मेटल स्कल्पचर है, स्टोन स्कल्पचर है, टेराकोटा है, सील से क्या यूज किए जाते थे? जवाब होगा सील। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो जान कैसे? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर कंसीडर द इंडस वैली? जवाब देंगे? नहीं जवाब देंगे आप लोग। अगर जवाब आप लोग नहीं देंगे तो फिर मैं सवाल करने का कोई फायदा तो नहीं हो पाएगा। सवाल करने का, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल वाज नॉट यूज्ड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? रॉ मटेरियल क्या नहीं यूज किया जाता था? इट वाज रेड सैंडस्टोन का प्रयोग नहीं होता। So unless until you will not give answer to me, then how I can go with that too? Please give me something about that. Comment I wanted from your side. Do you understand? Did you get my point or not? आप मेरे पॉइंट को समझ पाए या नहीं समझ पाए? जल्दी से जवाब दे दो। शिव बहादुर जी, सत्यम मिश्रा जी एंड विकेश पासवान जी, प्लीज लेट मी नो सर्टेन आंसर फ्रॉम योर साइड। जल्दी से जवाब दो। आपको यस या नो में जवाब दे दो। टुमारो आई विल बी अवेलेबल ऑन 10:30, अवेलेबल ऑन 2:30, 2:30 में। कल भी मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। आज टेक्निकल ग्लिच हुआ था जिसके कारण 4 से 7 मिनट का डिले हुआ था। फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज मेक कॉमेंट ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।